Welcome students. Today we will see the another part of the chapter Human Nutrition from class 11th. In this video we will see about the carbohydrate digestion. Whenever we are eating food, that food is different forms. Okay. Sometimes it is disaccharides, sometimes it is polysaccharides. Disaccharides, for example, it is sucrose or it is also lactose. Or if we are eating polysaccharides like starch, glycogen or cellulose also, that is we can call roughage. Cellulose is not digested in human stomach, it is digested into the animals like cows, ruminant animals. Okay. So we will see here that according to which place this digestion is occurring or takes place, it is depending on that how much or which percentage it will occurs. So according to the place of digestion means, suppose we are seeing about the carbohydrate digestion. So in buccal cavity, first we will see that this starch will convert into simpler form, means complex form will convert into simpler form with the help of salivary amylase enzyme. This salivary amylase enzyme will activated at 6.8 pH, that is slightly acidic pH. मतलब 7 को neutral होता है तो थोड़ा सा slightly acidic 6.8 pH is necessary, and chloride ions are also necessary for activation of salivary amylase. So this starch will convert into maltose, it will broke down into isomaltose and limit dextrins. तो यहाँ पर क्या है कि बकल कैविटी में स्टार्च का बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 3% डाइजेशन ही होता है यहाँ पर. देन व्हाट हैपन दैट दिस बकल कैविटी का जो भी फूड है दैट वाज चेव्ड इनटू द माउथ और बकल कैविटी, एंड दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन, and these are the enzymatic reactions. So what happened that bolus part, bolus means that chewed part, जो छोटा सा हमने निवाला बनाया हुआ रहता है, जो हमारे माउथ के अंदर हमने खाने के बाद बना रहता है, that will enter through the esophagus. So that bolus part will enter into the stomach. So in that stomach 30% digestion of starch will takes place विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. स्टमक के अंदर भी जब फूड जाता है वो बोलस पार्ट, दैट टाइम ऑल्सो समवॉट सलाइवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट हियर, बट ड्यू टू द डिफरेंट पीएच, स्टमक के अंदर हमने देखा है कि अलग पीएच होता है, सो ड्यू टू द डिफरेंट पीएच इट विल नॉट एक्ट 100%. सो 3% बक्कल कैविटी के अंदर फूड का डाइजेशन होगा स्टार्च का, एंड 27% इन टू द स्टमक. सो टोटल ओवरऑल 30% डाइजेशन हो गया है अब तक. What happened in that stomach? No carbohydrate digestion is taking place. Why? Because gastric juice has no amylase. Means gastric juice के अंदर amylase इस टाइप की जो enzymes होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से स्टमक के अंदर स्पेसिफिकली डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का. जो भी होगा बकल कैविटी के साथ में जो आया सलाइवरी अमाइलेज है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर करता रहेगा. ओके. Now we will see that whatever the partially digested food was there, that is already become acidic because it is present in the stomach. That is called as chyme. This chyme was transferred into the duodenum. Duodenum क्या है? Small intestine का part होगा, वहाँ से जो कि attach होगा starting part to the stomach. From duodenum it will enter. So starch here, that 75% of starch was digested here, means last part यहाँ पर हो जाएगा. Okay. For this starch digestion what happened that pancreatic amylase will helps for this starch digestion, and for this pancreatic amylase digestion pH is necessary 8.6 to 8.8 pH. Means if we will see that 8.6 to 8.8 means it is basic pH. Okay. Then this starch will broken down into the smaller simpler forms, that is maltose, isomaltose और limit dextrins also. अगर हमने देखा कि ये जो माल्टोज हैं तो माल्टोज क्या होता है, कन्वर्ट होता है अगेन, ये जो क्या डाइसैकेराइड्स हो गए तो फिर से उनको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना होगा. तो ये माल्टेज एंजाइम विल हेल्प टू ब्रोक डाउन माल्टोज इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. Means maltose is enzyme which is working on 8.6 to 8.8 pH. Again it is having the basic pH. Again we will see same thing is sucrose. Sucrose is also acts in the presence of sucrase enzyme, and which it will convert into glucose plus fructose. Next thing is that lactose also.
lactose also with the help of lactase enzyme it will broken down into glucose and galactose. This enzyme also means isomaltase enzyme also help for the breakdown of isomaltase into glucose plus glucose, and here limit dextrin also get broken down into limit dextrinase एंजाइम्स के साथ में हेल्प करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. अगर बच्चों यहाँ पर देखा हमने तो ओवरऑल मोस्टली वी विल गेट ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर. सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म वी विल गेट, and at which place this digestion will take place, that is also important. So this is all about the carbohydrate digestion. Thank you.